Assalamu alaikum. Hi dear students. I am Muzafar Hussain and today we will discuss the MCQs from the life and poetry of John Donne. So आज हम जॉन डन की पोइट्री और उनकी ज़िंदगी से MCQs को कवर करेंगे. So हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट MCQs है. डन was born and died in. कि डन कब पैदा हुआ और कब मरा. तो इसका राइट आंसर है 1572 until 1631. Number 2. And lover's infiniteness, what does the speaker demand? And lover's infiniteness जो पोएम है उसमें स्पीकर किस चीज़ की डिमांड करता है? ऑल ऑफ हिज लेडीज लव, सिर्फ अपने लेडी यानी महबूबा की प्यार और मोहब्बत को. 3. And Donne's the indifferent, which is the only quality that the narrator dislikes in a woman. डन की जो पोएम है द इंडिफरेंट, उसमें से औरत की कौन सी क्वालिटी है जिसको राइटर अनलाइक करता है, पसंद नहीं करता. सो राइट आंसर ट्रूथफुलनेस. 4. As he wrote Good Friday 1613 riding westward, where was Donne actually going? कि जब जॉन डन ने गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग वेस्टवर्ड लिखी तो जॉन डन एक्चुअली कहाँ पे जा रहा था? वेल्स जा रहा था. 5. What author named a book after a line from Donne? के डन की शायरी में से एक लाइन को लेकर किस राइटर ने बुक लिखी? राइट आंसर अर्नेस्ट हेमिंगवे. तो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी. 6. जॉन डन हेल्ड व्हाट ऑफिस एट सेंट पॉल्स? के जॉन डन ने सेंट पॉल में क्या ज़िम्मे उनके काम था या उनका ओहदा क्या था? तो डैन, वो वहाँ पे डैन थे. 7. What illness did Donne suffer from before writing the meditation? मेडिटेशन को लिखने से पहले डन को कौन सी बीमारी लाक हुई? स्पॉटेड फीवर. What was the occupation of Donne's father? डन्स के वालिद का ऑक्यूपेशन क्या था, कारोबार क्या था? एन आयरन मोंगर, आयरन मोंगर थे. 9. Where did Donne fight as a soldier? एक सिपाही के तौर पे डन कहाँ पे लड़ा? कैडीज, स्पाई में. डेथ बी नॉट प्राउड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ पोएम? कि डेथ बी नॉट प्राउड का जो ताल्लुक है किस किस्म की नज़मों से है? द हॉली सोनेट्स. तो ये हॉली सोनेट्स की टाइप में से है. 11. इन द सन राइजिंग द पोइट कॉल्स द सन व्हाट? के सन राइजिंग में पोइट सन सूरज को क्या कहता है? राइट आंसर अ बिजी ओल्ड फूल, एक बूढ़ा बेवकूफ़ मसरूफ़. इन द सन राइजिंग द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद. सन राइजिंग में राइटर अपने आप को किस चीज़ के साथ कंपेयर करता है? हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया के साथ. वो कहता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ और हाफ ऑफ द वर्ल्ड उसके लवर है, तो इस तरह से एक पूरी कायनात वजूद में आती है. 13. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोइट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स? कि उस पोइट का नाम क्या था जिसने मेटाफिजिकल की टर्म ईजाद की या नाम दिया? सैमुअल जॉनसन. इन वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोइट? कि किस वर्क में सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल की टर्म को यूज़ किया? लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट में यूज़ किया. 15. From the following poets dash said about John Donne, he affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses where nature only should reign. ये जो स्टेटमेंट है किस शायर ने जॉन डन से मुतल्लिक कही थी? सो राइट आंसर इसका जॉन ड्राइडन, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था. Dash term is related to metaphysical poetry that proposes the tendency of these poets to display their learning in poetry. So right answer है wit. 17. Poets associated soul with a drop of dew in one of his poems. Andrew Marvell. Right answer. 18. In Donne's The Apparition, which of the following symbols insinuates the death of the woman who the narrator is in love with? Quicksilver. 19. John Donne was married to
एनेमोर, जॉन डन की शादी एनेमोर से हुई। एनेमोर जॉन डन की बीवी थी। जॉन डन was born into a family that was dash but he became a priest. जॉन डन एक ऐसी फैमिली में उसने पैदा हुआ जो कि रोमन कैथोलिक थी और एंग्लिकन थी। 21. John Donne was on the path to success. He was a private secretary to a high court official, Sir Thomas Egerton. How did he ruin his career? He eloped with Egerton niece. तो वो Egerton niece के साथ भाग गया था। 22. Henry Vaughan experienced a spiritual awakening inspired by the poems of what metaphysical poet? So right answer, George Herbert. 23. The metaphysical poets employed many extended comparisons, also known as conceits. मेटाफिजिकल पोएट्स सबसे ज़्यादा अपनी पोएम्स में या शायरी में कंसीट्स का यूज़ करते हैं। 24. He wrote both A Divine Mistress and A Cruel Mistress. थॉमस कैरे ने ये लिखी है, A Divine Mistress and A Cruel Mistress. 25. What Donne poem contains these lines? If ever any beauty I did see, which I desire and caught, it was but a dream of thee. तो ये लाइन्स ली गई हैं द गुड मारो से। What Donne poem contains these lines? किस पोएम में डन्स की ये लाइन आई है? तो द गुड मारो में। 26. Dash be not proud, though some have called the mighty and dreadful. Fill in the missing word from this Donne sonnet. तो यहाँ पे आएगा death. Death be not proud. पोएम में से ये लिया गया, तो यहाँ पे आएगा death. 27. What Donne poem is a play on Marlowe's passionate shepherd to his love? Right answer, The Bait. 28. This poem by John Donne was probably about his wife's death. A Nocturnal upon Saint Lucy's Day. ये जो पोएम है जॉन डन की अपनी वाइफ की डेथ से मुतल्लिक है। 29. जॉन डन डेडिकेटेड हिज हॉली सोनेट्स टू हुज मदर? जॉन डन ने अपने हॉली सोनेट्स किसकी मदर के लिए किए, डेडिकेट किए? जॉर्ज हर्बर्ट्स को। 30. जॉन डन्स द एनिवर्सरीज इज a dash an elegy in 2 parts. 31. Donne's father died when he was just -year-old and his mother married. 4. Donne's father तभी फौत हो गया था जब जॉन डन 4 साल का था। 32. The life of John Donne coincide with the reign of which absolution monarch? So right answer है Elizabeth I, James I and Charles I. In a valediction forbidding mourning, how does Donne describes the death of a virtuous people? Silent. In valediction forbidding mourning में क्या शायर बयान करता है कि जो नेक लोग होते हैं वो खामोशी से उनकी मौत हो जाती है, वो दुनिया से चले जाते हैं। 34. Which of the following words is missed from the first verse of the canonization by John Donne? For God's sake, hold your tongue and let me love. कहता है कि खुदा के लिए अपनी ज़बान को बंद रखो and let me love, और मुझे मोहब्बत करने दो। 35. The first and last stanzas of Donne, Better My Heart, include a large number of which of the following words classes? Right answer, verbs. 36. John Donne's love poetry is written at dash levels. 3 levels पे लिखी गई जॉन डन की लव पोएट्री। So right answer is 3. 37. The good morrow refers to dash of the true love, dawn of the true love. 38. The good morrow includes the religious conceit of 7 sleepers 10, यहाँ पे मजहबी conceit लिया गया है। 39. Despite his great education and poetic talent, Donne lived in dash for several years, relying heavily on wealthy friends. Poverty, गुर्बत में रहा था ये। 40. Donne secretly married, with whom he had 12 children. जॉन डन ने किससे खुफिया शादी की जिसमें से 12 बच्चे हुए? So Enemour. 41. John Donne was appointed Chief Secretary to Lord Keeper of the Great Seal
So right answer, Sir Thomas Egerton. 42. In 1615, Donne was awarded an honorary doctorate in divinity from Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1615 ईस्वी को जॉन डन को एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी. 43. John Donne satires deal with common Elizabethan topics such as corruption in the legal system. So right answer, corruption in the legal system. 44. Blasted with sighs and surrounded with tears, hither I come to seek the spring, and at mine eyes and at mine ears receive such balms as else cure everything. These lines are taken from ट्विकनम गार्डन. तो ये लाइन्स ट्विकनम गार्डन से ली गई हैं. एंड ट्विकनम गार्डन डिनर कॉल्स लव एज डन कॉल्स लव एज स्पाइडर लव. ट्विकनम गार्डन में डन लव को कहता है कि ये स्पाइडर लव होता है. द स्पाइडर टर्न्स टू डैश मैना टू गॉल. द स्पाइडर टर्न्स मैना टू गॉल. 47. Song Go and Catch a Falling Star has theme of disloyalty of women. Go and Catch a Falling Star इसका जो थीम है वो औरतों की बेवफाई है. 48. John Donne, Anne Donne, undone was said by John Donne. 49. Lives a woman true and fair. These lines refer to the disloyalty of women. तो ये औरतों की बेवफाई की तरफ ये जो लाइन्स हैं रेफ़र करती हैं. 50. And death shall be no more, death thou shall die. These lines are taken from a holy sonnet, death be not proud. तो ये लाइनें death be not proud में से ली गई हैं. Okay, dear students, thank you so much. Please subscribe my channel.